entry's husband to one of the most beautiful princes of the world. I'm an engineer, an entrepreneur, traveler, author, blogger, podcaster, and a parenting expert for more than a decade. And I'm here to help all those parents like you to bring the best versions of their children. So, friends and parents, today I'm going to talk about very aggressively in terms of you and your love for your child. So, the topic which I have chosen today is, have you ever loved your child? Have you ever loved your child? Seems very offensive. But hold on. I'm not here to, fight with you or something like that. I'm here to tell you something very, very special and something very specific. So when I choose to take this topic, lots of things came in my mind. What to say, what not to say. But I thought, no, let me talk about it because this is a must for a parent, for a person like you, a father or a mother like you, to understand whether you really love your child, right? So, friends and parents, don't be offensive. Just try to understand what I'm trying to say. When I say loving your child, what does it mean? Loving your child doesn't mean that emotionally you are not connected. Mind it. You are the best well wisher of your child for all those reasons because you are you are there, right? You have, you know, I would say, first of all thought of creating a baby, then you gone all through the process, the medical and all those things, and you were there when the child was physically born, right? So no doubt that you love your child, but what is your definition of love for your child? That is very critical because the definition of love changes as a function of time. When the child is very young infant, the love for your child means something else. When your child start going to a preschool, that time the definition of love changes. When your child start going to a regular school, again the definition of love changes. When your child grows in adolescence or teenager, or even he grows or she grows in a grown up child, at that time also there is a love, but that time the definition of love is something else, right? So today I'm going to talk about love for your child in different aspects and in different ages, right? So मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि थोड़ा सा पीछे जाएं, यदि 20-25 साल 30 साल पहले जाएं, जहां पे माँ बाप शादी करते थे अपने बच्चों की, क्या सोच के करते थे और क्या पैरामीटर होता था. I belong to a village and I have seen lots of these kind of things. That is why I can correlate. I can tell you. पहले क्या होता था? आज से 50 साल पहले की मैं बात करूं, 40 साल पहले की मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता था? माँ बाप अपने बेटे या बेटी के रिश्ता की जब बात करते थे ना, they used to see कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितने खेत हैं, उनका घर कितना बड़ा है, या उनके घर पे कितने पेट्स हैं, पेट्स इन द सेंस कि कितने गाय हैं, कितने भैंस हैं, कितने अनाज की वो जो ढेर होते हैं ना, जिसको हम लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसका नाम दिया जाता है, जहाँ पे धान या गेहूं स्टोर करके रखते थे. हमारे गांव में उसको बेरिया कहे जाते थे, बेरिया. उसी तरह हर गांव में ऐसा चीज होता था ना. पीपल यूज टू जज द फैमिली बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स. कितनी फिजिकल वेल्थ है, राइट? और लड़का ठीक ठाक होना चाहिए, लड़के के पिताजी ये करते हैं, दादाजी ये करते हैं, और शादी फाइनल हो गई, शादी हो गई और जिंदगी चलने लगी अच्छे से. उस समय बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं थे. परसेप्शन चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद लोगों ने ना कहा कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज द पैरामीटर्स आर नॉट राइट. तो उसके बाद पैरामीटर क्या होने लगा कि लड़का क्या करता है, हाउ एजुकेटेड द गाय इज, राइट? कितना पढ़ा लिखा लड़का है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, दैट वे. सो 20-25 सालों में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया. जहां पे एक टाइम पे पेरेंटल प्रॉपर्टी देखी जाती थी, उस पर लड़के को देखा जाने लगा, लड़के की स्मार्टनेस या लड़के का एजुकेशन और उसकी ग्रोथ देखी जाने लगी. सो वहां भी क्या था कि जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, दे यूज्ड टू अगेन जज एंड डिसाइड ऑन सम अदर पैरामीटर्स. वहां भी प्यार था, पहले में भी प्यार था, यहां में भी प्यार है और प्यार था. फिर समय बदला, समय के साथ साथ मैं बोला परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है, और फिर से बदली चीजें. और इस बार क्या हुआ, अब दोनों तरफ के पेरेंट्स ने ये देखना शुरू किया कि क्या लड़का हमारी लड़की के लिए सूटेबल है या लड़की हमारे लड़के के लिए सूटेबल है या नहीं है. पहले की तरह सोच नहीं थी. सो अगेन यू डेफिनेटली लव एट दैट टाइम ऑल्सो. माँ बाप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, बट पैरामीटर्स बदलते गए. सिमिलरली
When I talk about the youngsters, the infant, मैं बोलता हूँ जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. उस समय आपका लव क्या है? Your love is to take care in terms of physiological needs. बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को क्लीन करना है, बच्चे को टाइम से मेडिसिन देने हैं, वैक्सीनेट कराना है, इन सो ऑन सो फोर्थ. जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, सो वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हिम और हर इन टर्म्स ऑफ सम अदर फिजियोलॉजिकल नीड्स. उनको टॉयज चाहिए, उनको मे बी कुछ अलग तरीके के क्लोथ्स चाहिए, या सिमिलरली यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. वहां पे लव का डेफिनेशन फिर से बदल जाता है. फिर इन स्पाइट ऑफ यू very emotionally attached to your child, you start, and the day one when you start sending your child to the preschool, पहला दिन होता है जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपने माँ बाप से दूर, अपने परिवार से दूर. उस समय भी आप प्यार करते होते हैं, लेकिन यू टेक अ प्लंज ऑन योर इमोशंस एंड यू से नहीं, दिस इज राइट, मुझे तो बच्चे को प्री स्कूल में डालना ही, तभी तो वो सीखेगा, उसकी कंपनी बनेगी, उसके पियर्स के साथ वो रहेगा, तो ही और शी विल ग्रो. वहां भी प्यार है. बट आप देखिए, मेरा जो ये क्वेश्चन है ना, हैव यू एवर लव योर चाइल्ड, का पर्पस क्या है? आई वांट टू टेल यू दैट द डेफिनेशन ऑफ लव चेंजेस एवरी 2 years और 3 years, और मैं तो कहता हूँ कि हमेशा बदलता रहता है. इट्स वेरी डायनेमिक, राइट? जब प्री स्कूल से बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाता है तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है. वहां पे उसका फैमिली, उसका कलीग, उसका स्कूल, उसका परिवेश, पर्यावरण, सब कुछ बदल जाता है. बेस्ड ऑन दैट यू ऑल्सो टेक डिसीजंस, राइट? एंड यू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. वहां भी आपका प्यार है. जब बच्चा उससे आगे और बढ़ता है, बच्चे की अपनी सोच समझ डेवलप होनी शुरू करती है, एडोलसेंस में जाता है, तो ही और शी स्टार्ट्स सजेस्टिंग यू. उनकी अपनी एक फीलिंग डेवलप होती है, उनकी अपनी एक सोच डेवलप होती है. वहां पे भी आपका प्यार है. एंड यू अगेन एज रिक्वायर्ड, आप फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावे आप उनको कंफर्ट देते हो, लव देते हो, केयर देते हो. तो ये जो लव है ना, लव का बहुत अलग अलग डेफिनेशन होता है. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, मैं आपको यही कह रहा हूं, प्यार की परिभाषा समय के साथ और परिवेश के साथ बदलती रहती है. एंड वी एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट. जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूं, दैट मीन्स आई ट्राई टू डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर माई चाइल्ड. बट डू आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? यदि बच्चा सपोज किसी से लड़ाई करके आ गया, व्हाट डू वी डू? थप्पड़ मार देते हैं या समझने की कोशिश करते क्या हैं? व्हाट डू वी डू एंड व्हाट इज राइट इन दैट कॉन्टेक्स्ट? हमें करना क्या चाहिए, ये तो हमने सीखा ही नहीं. हम अपने नॉलेज के हिसाब से, हमें जो दिमाग में सही लगता है, हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं एंड वी डू दैट, करेक्ट? लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि एक्चुअली में वो गलत है कि सही है. करेक्ट? थैंक यू अद्वितीय, अनामिका, थैंक यू नॉटिनेटर. सो द पॉइंट हियर इज, जब मैं ये कहता हूं कि आपने अपने बच्चे को कभी प्यार किया है, दैट मीन्स मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे से दिल से इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं एंड यू वांट द बेस्ट थिंग टू बी गिवन, बेस्ट केयर टू बी टेकन. बट are we really equipped to understand what is that best love for your child? Because that is not one thing, it's a series and it's a combination of so many other things going around you and your child. उस परिवेश में क्या सही है, क्या गलत है, और आपका जो स्टेप है वो कितना सही है, रेलेवेंट है, ये आपको कौन बताएगा? So friends and parents, my request to you is, please learn all these things, what is required at what time. Don't just take one formula and you try to be a parent just because you are a physical parent. Try to be with your child in all those different circumstances wherein your child will be needing in different forms. कभी बच्चा आपको दोस्त के रूप में चाहेगा, कभी बच्चा आपके गार्जियन के रूप में चाहेगा, कभी बच्चा आपको कोच के रूप में चाहेगा, राइट? तो ये सारे रोल्स आपको निभाने होते हैं, ये सब प्यार है. तभी मैं कहता हूं प्यार का कोई एक रूप नहीं होता. Love has multiple forms, and for your children it is very critical to understand which form to be applied at what time. So when I say have you love your child, please understand, I'm not going to hurt you and asking that you are not emotionally connect. You are 100% there, no doubt about it. But the only point I want to make you is understand that you should be able to understand the definition of love as a factor of time, because the definition of love, your actions changes and should change based on the time
based on the situation where your children is. So guys, that's all for today's topic. Please don't be offensive and try to understand what I'm trying to say. एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये जो बोल रहा हूं वो कितना तर्क संगत है आपके बच्चे के परिप्रेक्ष्य में. You try to understand. Don't just apply one formula for everything, right? And I always say every child is unique, every parent is unique. So there is nothing as such a formula for parenting, but you need to learn what to do, what not to do. Correct? And that we have not learned at any point of time. That is why it is utmost important for you to learn and then apply, because your children are the best gift of the God, and you love them like nobody else, and you are the best judge to take a decision. But understand what is good, what is bad, what is right, what is wrong for your child in your context and the overall growth of your child, your happiness, your entire parenting journey. And obviously I talk about a cohesive bonding, a special bond between you and your child. So if you love your child really well and want to him or her to excel in life, and you also want the happiness quotient of the family to be increased, then please mention all these things in your mind, saying that there is no one formula for showing love apart from the physiological needs which you are supposed to do as a parent. You have to take care of so many other things, and those other things, they do change with function of time. So do take care and apply this. Thank you all. Thank you very much.